morning, second class children. Are you ready for the class? Now, so let me start with the new bits. They are like rhyming words, and I will give some picture oriented words. And the next one we will go with the sentences. Only 4 lines about the related word. Which matra? O matra. So we had completed still. By today or tomorrow we will complete our O matra sentences. Okay, and then we will go to the next is Au matra. So before Au matra we start, again we will revise complete all the matra. Then only I can start the Au matra. Okay. So are you all ready, children? Now let's just focus on the rhyming words. The new bit name is rhyming words, and another one is I am going to start, that is sentences. Okay. So be ready, children. Let me start with the rhyming words. What do you mean in Hindi? What is it? In Hindi, what is the name of the bit? Saman tuk wale shabd. The name of the this rhyming word in Hindi is Saman tuk wale shabd. Children, again I am telling you once again, I am not highlighting any heading in Hindi because teacher hadn't give the practice about the Samyuktakshar and Dvityaakshar. Whereas if I start giving the heading in Hindi, there you can see the Samyuktakshar. So it is very high risk for you. You can't able to understand what is Samyuktakshar, you doesn't know, and what is Dvityaakshar also you doesn't know because I didn't taught you. Okay. So after this session only I can start, after Barakhadi only, that too only I can show you the basics, what is Samyuktakshar and Dvityaakshar orally. Okay, that all you can learn in the next coming year. Okay, now let me start, because this question comes sometimes, why teacher is always giving all these headings in ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ, నాట్ ఇన్ హిందీ, ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు టీచర్ హిందీలో అంటే, మీకు తెలుగులో సంయుక్తాక్షరం ద్విత్వాక్షరం ఎలా ఉందో అవన్నీ హిందీలో వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను హిందీలో అలా వర్డ్ పెట్టాను హెడ్డింగ్, మీకు చదవడం వస్తుందా? ఎందుకు రాదు? బికాస్ టీచర్ మీకు నేర్పించలేదు సంయుక్తాక్షరం ద్విత్వాక్షరం, అవునా కదా? మళ్ళీ హెడ్డింగ్ ఎలా చదువుకుంటారు? మీకు హెడ్డింగ్ రాదు అలా చదవడానికి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ గివింగ్ దిస్ హెడ్డింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ చిల్డ్రన్, because I don't want to take you in the risk. Okay, heading మీకు చదవడం రాకపోతే బిట్స్ ఎలా రాస్తారు? That is the reason teacher is giving highlighting in Hindi, but from next year you can see all the headings will be in Hindi only. Okay children, is it clear? आपको समझ में आ रहा? तो इसलिए टीचर आपको कैसे लिखा रहे हैं, अंग्रेजी में आपको पूरा जो भी जितने भी बिट्स है उसके नाम पूरे किसी में आ रहा है, किस भाषा में आ रहा? अंग्रेजी में आ रहा. ठीक है, now please follow the bits. Now we ready for the practice. Okay children, now saman tuk wale shabd, right? Rhyming words, write the rhyming words. Rhyming words means same sound, okay, but different word. Now get ready for the few words I am going to show you, just only for the practice purpose children. Get ready. Bowl, same sound, take out that same sound. Bowl, different. Pole, bowl, pole. But I am going to take other matra which we have completed already. A and I matra also will include in this rhyming words. Okay children, bowl, pole, mole, mako ki matra mo, la, mole, घाको की मात्रा घो, ल, घोल, मोर, माको की मात्रा मो, र, मोर, चाको की मात्रा चो, र, चोर, मोर, चोर, बोल, पोल, मोल, घोल, मोर, चोर. ओके, नेक्स्ट वन, भोर, घोर, बिग साउंड्स, भोर, घोर. नेक्स्ट वन, रोटी, चोटी, रोटी, चोटी. ओके, नेक्स्ट वन इज बोली, टोली, बोली, टोली. Okay, now 6, these are the 6 words. Now different matra like A and I matra. Get ready. I will take the first, let me complete this. Loha, poha, loha,
poha. Okay, next one, eighth one, that is nayya. This is previous matra, children. Nayya, nayya, bhaiya. भा को आई की मात्रा भाई, या को आ की मात्रा या. नेक्स्ट वन, मैया गैया. मैया मीन्स मदर. मैया गैया, कौ. ओके, द नेक्स्ट वन इज मेला, फेर. FAIR, फेर. ठेला, कार्ट. ठेला मीन्स CART, कार्ट. सैनिक, soldier. Okay, दैनिक, daily. What is the meaning of दैनिक? Daily. Okay, next one, शेर, बेर. शेर, बेर. Next one, next one, कोड़ा, थोड़ा. कोड़ा, थोड़ा. Okay, 13 words. Now get ready, children. Rhyming words. Same sound but different words. Okay, so are you all ready? बोल, पोल. मोल, घोल. मोर, चोर. भोर, घोर. रोटी, छोटी. बोली, टोली. बोली, टोली. लोहा, पोहा. नैया, भैया. मैया, गैया. मेला, ठेला. सैनिक, दैनिक. शेर, बेर. कोड़ा, थोड़ा. Okay, now if you want to go with the spellings, children, how will you learn with the spellings? Yes, बाको की मात्रा बो, ल, बोल. पाको की मात्रा पो, ल, पोल. There is no matra after the letter, so you stop the sound of that word. Pole. Don't say pola, poli. It is pole. ల తర్వాత మాత్ర లేదు, మీరు అక్కడే ఆపేసాలి. ఓకే, పోల్ అని. मोल, माको की मात्रा मो, ल, मोल. घको की मात्रा घो, ल, घोल. नेक्स्ट वन, माको की मात्रा मो, र, मोर. चाको की मात्रा चो, र, चोर, thief. Okay, next, मोर means peacock. Okay, next means भोर. भाको की मात्रा भो, र, भोर. घाको की मात्रा घो, र, घोर. राको की मात्रा रो. टाकू बड़ी की मात्रा टी, रोटी. इट इज नॉट स्मॉल मात्रा, बड़ी की मात्रा. चाको की मात्रा चो. टाकू बड़ी की मात्रा टी, चोटी. नेक्स्ट, बोली. बाको की मात्रा बो. लाकू बड़ी की मात्रा ली, बोली. टाको की मात्रा टो. लाकू बड़ी की मात्रा ली, टोली. Come on, say no. बोल, पोल. मोल, घोल. मोर, चोर. भोर, घोर. रोटी, छोटी. बोली, टोली. Okay, next one, लोहा, पोहा. नैया, भैया. मैया, गैया. मेला, ठेला. सैनिक, दैनिक. शेर, बेर. कोड़ा, थोड़ा. Once again, लाको की मात्रा लो. हाकुआ की मात्रा हा, लोहा. पाको की मात्रा पो. हाकुआ की मात्रा हा, पोहा. नाको आई की मात्रा नई. याकुआ की मात्रा या, नैया. भाको आई की मात्रा भई. याकुआ की मात्रा या, भैया. माको आई की मात्रा मई. याको आ की मात्रा या, मैया. गाको आई की मात्रा गई. याको आ की मात्रा या, गैया. मेला. माको ए की मात्रा में. लाको आ की मात्रा ला, मेला. ठाको ए की मात्रा ठे.
ला को आ की मात्रा ला, ठेला. Okay, the next one is सैनिक. Now sa की भी देर मुंदी I मात्रा. Come on say. सा को I की मात्रा sai. It's not a मात्रा. It is I मात्रा. सा को I की मात्रा sai. ना को छोटी की मात्रा नी, क. सैनिक. What is the same? Different word. Okay. The same sound. दैनिक. दा को I की मात्रा दै. ना को छोटी की मात्रा नी, क. दैनिक. शा को एक की मात्रा शे, र. शेर. बा को एक की मात्रा बे, र. बेर. का को की मात्रा को, डा को आ की मात्रा डा, कोड़ा. था को की मात्रा थो, डा को आ की मात्रा डा, थोड़ा. सो वंस अगेन, बोल, पोल. मोल, घोल. मोर, चोर. भोर, घोर. रोटी, चोटी. बोली, टोली. लोहा, पोहा. नैया, भैया. मैया, गैया. मेला, ठेला. सैनिक, दैनिक. शेर, बेर. कोड़ा, थोड़ा. Okay, so how many words I had given to you all? 13 rhyming words are there. Sorry for the disturbance. Okay children, now so this is the words we had completed. Okay, now we will go with the sentences. O matra sentences. Okay, now the next one is how to write the O matra sentences. Okay, and how to spell the word, and we have to go for the sentences children, not O matra, O matra sentences. Now get ready. Read this lesson. नाचो गाओ होली है. The name of the lesson is ना को आ की मात्रा न, चा को की मात्रा चो, नाचो dance. Okay, गाओ sing. गा को आ की मात्रा ग, ओ, गाओ. होली है. Holy means festival. Name of the festival. What will you do during festival? This holy festival you will enjoy. You will dance and sing, isn't it? So नाचो गाओ होली है. Okay. So very soon we are going to get. Now we can see this. Which festival? Holy festival, isn't it? So नाचो गाओ होली है. This lesson, name of this lesson. इस पाठ को पढ़ो. Read this lesson. इस पाठ को पढ़ो. ढो. Okay, read this lesson. This is the heading. Okay, now get ready. Only 4 lines teacher will show you the practice. The next 4 lines tomorrow children. Okay, होली का दिन था. हा को की मात्रा हो, ला को बड़ी की मात्रा ली. होली. का को आ की मात्रा क, दिन. दा को छोटी की मात्रा दिन. था को आ की मात्रा था. होली का दिन था. It's a which festival day? Holy festival. It's a festival of what? Holy day. Okay. सभी जानवर, all the animals, सभी जानवर चुपचाप बैठे थे. All the animals are sitting very silently. Okay, they are sitting what? Very silently. चुपचाप बैठे थे. चुपचाप means silence. Okay. चुपचाप बैठे थे అంటే కూర్చోడం. అందరూ ప్రతి ఒక్క అనిమల్స్, అన్ని అనిమల్స్ సైలెంట్గా కూర్చున్నారు. बैठे थे. बैठे थे. ओके, सभी जानवर चुपचाप बैठे थे. सॉरी, डोंट राइट द नंबर्स फॉर द सेंटेंसेस. आई एम वेरी सॉरी. तोता और कोयल. तोता मीन्स पैरट. ओके, तोता. और मीन्स और मतलब एंड. और का मतलब क्या? एंड. कोयल कुकू बर्ड. का को की मात्रा को या ल. कोयल पेड़ पर बैठे थे. Where they were sitting? They are sitting on the tree. Which birds are sitting on the tree? तोता, parrot and cuckoo bird. पेड़ पर बैठे थे. Okay. Next one. So which bird is sitting on the tree? Parrot and cuckoo bird. They are sitting on the tree. Okay. Next, तोते ने
तोते पैरट व्हाट द पैरट डिड तोते ने खरगोश पर खरगोश पर पानी डाल दिया डाको आकी मात्रा डाल सो ओके क्या डाल दिया उसके ऊपर पानी डाल दिया कौन डाल दिया तोते ने खरगोश पर पानी डाल दिया नाउ लिसन हियर स्पेल द वर्ड होली का दिन था हाउ विल यू स्पेल द वर्ड आई हैव शोन यू द फर्स्ट सेंटेंस हाउ टू स्पेल द वर्ड हा को की मात्रा हो ला को बड़ी की मात्रा ली होली का को आ की मात्रा हाउ टू प्रोनाउंस का डोंट से क इट इज का दिन मतलब डे दा को छोटी की मात्रा दी न दिन था को आ की मात्रा था होली का दिन था फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीटेड नाउ सेकंड सेंटेंस स से क्या बनता सब्जी सड़क सब्जी सो दिस इज व्हिच लेटर स दिस इज भ से भालू नॉट बतख दिस इज सेकंड भ ओके भा को बड़ी की मात्रा भी नॉट छोटी की मात्रा दिस इज बड़ी की मात्रा यू हैव टू प्रोनाउंस सभी डोंट से सभी इट इज सभी ड्रैग दैट लेटर साउंड जानवर सभी मतलब ऑल सभी का मतलब क्या ऑल जानवर एनिमल्स जा को आ की मात्रा ज न व र जानवर मतलब एनिमल्स चुप चुपचाप मतलब साइलेंट ओके चा को छोटी की मात्रा चु प चुप चा को आ की मात्रा छ प चुपचाप बा को आई की मात्रा बै ठा को ए की मात्रा ठे बैठे था को ए की मात्रा थे बैठे थे नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस तोता तोता मीन्स पैरट विच बर्ड नेम ऑफ द बर्ड इज पैरट ताको की मात्रा तो ताको आ की मात्रा था तो प्लस था तोता और मतलब क्या एंड इंग्लिश में क्या बोलना एंड औ लेटर दिस इज औ नॉट मात्रा औ लेटर र और कोयल काको की मात्रा को य ल there is no matra after the ya or la letters then you should not drag any letter of that sound then just say koel it is a cuckoo bird okay now पेड़ ट्री पाकू एक ही मात्रा पेड़ का मतलब क्या ट्री पर ऑन पर बैठे sitting where they were sitting on the tree which birds were sitting on the tree पैरट एंड द कुकू बर्ड बैठे बा को आई की मात्रा बै ठा को ए की मात्रा ठे था को ए की मात्रा थे बैठे थे तोता और कोयल पेड़ पर बैठे थे द लास्ट सेंटेंस तोते ने अगेन ताको की मात्रा तो ताको ए की मात्रा ते तोते ना को ए की मात्रा ने खरगोश रैबिट ख सेकंड ख र गा को की मात्रा गो श खरगोश पर प र पर पानी पा को आ की मात्रा प ना को बड़ी की मात्रा नी पानी डाल दिया डा को आ की मात्रा ड ल डाल दा को छोटी की मात्रा दी या को आ की मात्रा या डाल दिया సో ఇక్కడ చిలక ఏం చేసింది కుందేలు పైన మొత్తం నీళ్లు వేసేసింది ఓకే सो तोते ने खरगोश पर पानी डाल दिया ओके सो होली का दिन था से ऑल ऑफ यू होली का दिन था सभी जानवर चुपचाप बैठे थे तोता और कोयल पेड़ पर बैठे थे तोते ने खरगोश पर पानी डाल दिया इज इट क्लियर चिल्ड्रन So once again, should I start now? Come on, say. होली का दिन था सभी जानवर चुपचाप बैठे थे तोता और कोयल पेड़ पर बैठे थे तोते ने खरगोश पर पानी डाल दिया okay so all the sentences clear again tomorrow next 4 or 5 sentences are there
So rest of the sentence tomorrow teacher will teach you. Today you listen the class whatever I taught you today, and please concentrate. Write very neat handwriting. Leave one line and write. Start from the margin only. Sharp your pencil, finger gap space, write on the blue line. Please, these are the rules for to write my language. Okay. So sharpening pencil is very important. Writing the strokes are very most important. And the third one is place the finger gap and write. Leave a line and write. Please follow all those rules and write it very neatly in the classwork. One more thing, children. Very most important note for you all. The thing is whatever I had sent the worksheets last week, and the classwork note has to be completed by 20th February. If at all you are not completing your classwork notes or worksheets, we are not going to allot any marks for the FA2. If you want FA2 marks, if you want to go for the FA exam, then you have to submit your classwork and worksheets to the front office. School open untadi kada, daily school regular ga open ga undi. Okay, the classes were going on for high school. But what about you, very small children? Still your schools are not open. So we are taking the classes for you. Then what about your classwork notebook corrections? Cheyala vadda? Cheyali kada. Mali meer tappu chesara leda, correction anni cheyadam manadi. Okay. So teacher should have to complete the corrections. So what is your duty? To submit your classwork notebooks and worksheet to the front office. Then I will do the correction. I will send it back to you all. Okay. So this is a very important. Note down this point and go through this all the sentences, whatever the hard words, what are the basic steps I was teaching step by step for each and every matra. Concentrate on that, listen, and please focus on the good handwriting, children. Thank you one and all. And the thing is what? And be safe everyone, and try to complete all the incomplete classwork notebooks. Okay.